Hello students. In the last video we have discussed about how to prepare a table, how to construct a table, and we have seen one example also regarding to that, how to apply that table in a proper way in the examples that we have discussed in the last video. In the today's video we are going to discuss about little different types of examples. Those are also similar as compared to the previous example, but small changes are there. Which one small changes I am going to start? Look this example, read this first example already I have written here. In triangle PQR, right angled at Q, PQ is equal to 3 cm, PR is equal to 6 cm. Then determine angle QPR and angle PRQ. Okay. How to find out those angles? I am going to start this example. Look and try to understand. Look here. Very simple type of examples are there regarding to this. When you will see this carefully, you will come to know that how it is simple. Okay. Look and try to understand. Look here. Sometime, what is the confusable matter in this example? That I want to tell you first. In triangle PQR, right angle at Q. Right angle at Q means Q is already given 90 degree. Remaining angles we have to find out. Students are getting sometime confusion and they are trying to find out the remaining side by using the Pythagoras theorem or different types of activities. Are you getting? But that is not asked. Which is asked in the example, that only you try to solve. And then after that they are saying, sir Pythagoras यूज किया है, साइड तो फाइंड आउट किया है, इसको तो मार्क दीजिए. ऐसे भी कुछ बातें हो जाती है. But it is not possible. What is asked, for that purpose marks are reserved. Okay, look here. For our understanding purpose I will draw here one figure, and by using that figure we will start this. First of all, write what is given. Solution given. What is given? In triangle PQR, angle Q is equal to 90 degree. In triangle PQR, angle Q is equal to what? 90 degree. PQ is equal to 3 cm. PR is equal to 6 cm. Okay. Then we have to determine those two angles. How to determine that? By using this given information. Look here, for our convenience I will draw here one figure of right angle PQR. This is given 3 cm. This is given 6 cm. Okay, am I right? Now look here. We are not going to find out side QR. We want to find out angle R and angle P. Measurement of angle R and angle P. Measurement of angle R and P means what? QPR. QPR and PRQ. PRQ means P and R we are going to find out. Okay. For finding this P and R, I am going to start. Look here. Angle R, suppose we have decided to find out first of all. Then for that purpose, which ratio we have to use? Look this carefully. Opposite side we know, hypotenuse we know. Means here we can use, for finding the angle R, we can use here easily which, okay, we can use here, and suppose we will get angle R, then we can find easily angle P. Okay, इसका और इसका मेजरमेंट मालूम हुआ तो 180 में से ये माइनस कर देंगे तो एंगल P भी आ जाएगा. समझ में आ रहा है? Then first of all we will try our level best to find out the angle R. For that purpose, which ratio we have to select? You can use any ratio from sine to sin, cos, tan, cot, sec, cosec. कौन सा भी एक रेशियो यूज कर सकते हो. इसमें कौन सा रेशियो यूज करना है? जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, प्लस पॉइंट है एग्जाम्पल में, वही यूज करने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल देखो इधर एंगल R इज देयर. Suppose we have considered now angle R. We have decided to find out angle R. Then opposite side we know, hypotenuse we know, and opposite side divided by hypotenuse means sine ratio. Do you understand? ऐसे रेशियो को सिलेक्ट करने की कोशिश करो. Okay. Then sin R is equal to sine of angle R is equal to opposite side PQ divided by hypotenuse PR. That is equal to PQ की value 3 divided by 6. That is equal to 3 1s are 3, 3 2s are 6, यानी कि 1 by 2. Do you understand what I have written? I have used angle R. I have written the ratio by using the sine definition. I kept here values and I got here 1 by 2. How I got 1 by 2? After simplification. Therefore, I can write like that. Sine R is equal to now 1 by 2. Got idea? मुझे क्या मिला इधर? Sin R is equal to 1 by 2. Therefore, अभी ये वैल्यू हमें यूज करनी है. ओके, साइन की कौन सी वैल्यू
देखनी है। देखो टेबल में जाके साइन के सामने 1/2 किसकी वैल्यू है, किस एंगल की वैल्यू है, ये खाली देखना है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? साइन का जो रो है उस रो में कौन सी वैल्यू 1/2 है, ये हमें देखना है। अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा 1/2 30 डिग्री को आता है। देयरफॉर डायरेक्टली वी हैव टू राइट हियर विदाउट यूजिंग एनी टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, r इज इक्वल टू 30 डिग्री। कैसे निकाला समझ में आ रहा है? साइन के रो में जाना है और 1/2 किस एंगल की वैल्यू है देखनी है। अगर देखोगे तो 30 डिग्री की वैल्यू वो 1/2 है। समझ में आ रहा है? तो इधर हमें मिल गया ओके एंगल आर, एंड बाय यूजिंग दिस एंगल आर नाउ वी कैन फाइंड, देखो इधर भी एंगल आर मिल गया तो पी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखो इधर मैं दिखा देता हूं। देन बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? ओके एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। पुट करो वैल्यूज। एंगल P वी वांट टू फाइंड आउट एज इट इज, Q ऑलरेडी हमें मालूम है, Q कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल R हमने फाइंड आउट किया है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडिशन करो, एंगल P प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रांसफर करो, एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये प्लस था इधर जाके माइनस हो गया। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझे? एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी देखो एंगल P और एंगल R ऐसे हमें शॉर्टकट में फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है। क्या फाइंड आउट करने बोला है? QPR एंड PRQ, वैसे लिखेंगे। देन एंगल QPR, P बीच में यानी कि एंगल P 60 डिग्री, एंड कौन सा है? PRQ। नेक्स्ट कौन सा है? देखो PRQ, PRQ एंगल R कितना फाइंड आउट किया हमने? 30 डिग्री। PRQ इज इक्वल टू, देखो इधर QPR इज इक्वल टू 60 डिग्री, PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझे? यानी कि पहला एंगल तुम्हें अगर फाइंड आउट हो गया तो दूसरा एंगल इजीली फाइंड आउट होता है। ओके और एक एग्जांपल दिखाता हूँ इधर, वो थोड़ा सा अलग किस्म का एग्जांपल है, ध्यान से देखो, अच्छी तरह से समझ में आएगा। लुक इट प्रॉपरली। इफ साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, 0 डिग्री इज लेस देन, इधर देखो 0 डिग्री, ओके इधर हुआ तो ग्रेटर देन, इधर हुआ तो लेस देन होता है। 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी एंड a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल a प्लस बी और a माइनस बी है इसके हिसाब से ये दिया है। ओके यानी कि जो a प्लस बी और a माइनस बी की जो वैल्यूज आएगी वो 90 डिग्री से क्या होती है? इक्वल हो सकती है और लेस भी हो सकती है। इधर क्या है? देखो a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके कैसे फाइंड आउट करना है? वेरी सिंपल है। ओके इसको भी हम टेबल के जरिए से सॉल्व करेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस, लुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉल्यूशन गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट गिवन, व्हाट इज गिवन? साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ऑफ, देखो इधर a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ओके understood? By using this only we are going to find out. Then okay look here, then अभी जिधर जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया था, पहले एग्जांपल में क्या किया था? साइन r इज इक्वल टू 1/2 था। तो साइन का जो रो है उस रो में which angle is giving us value 1/2, that I told you that we have to see and we have to write that angle. Simply यही करना है इधर। okay then sin of a minus b is equal to 1/2. Now look here, this a minus b show now angle. In the previous example we have seen over there sin r we have written, means only one letter were there, but now what is there? A minus b. But now while considering we have to consider one bracket
one bracket means only one letter we have to consider. Means a minus b, it shows, it represents the angle. It represents the angle. Okay, now same thing we have to follow. We have to see the table in that sign, and in that sign row we have to see 1 by 2. Where is 1 by 2? Okay, if you will observe carefully, then you will come to know that, what we will come to know that, dekho, then a minus b is equal to 1 by 2 value. This 1 by 2 value is of angle 30 degree. Are you getting? Here in the previous example I have written, what I have written I will show you. Look here, देखो इधर, sin r is equal to 1 by 2 where there, then r is equal to, I have written 30 degree. Got it? Yeah, it shows, this r shows the angle. Here also same thing, sin a minus b is equal to 1 by 2, means here a minus b shows the angle. We got here a minus b is equal to 30 degree. This is known as equation number 1. Then cos a plus b is equal to also 1 by 2. Cos a plus b is equal to also 1 by 2. What is given next? Cos a plus b is equal to 1 by 2. I have written. Now we have to see cos. Now we have to see cos horizontal line. Cos की horizontal line हमें देखनी है. And after looking cos horizontal line, we have to see that this 1 by 2 value is, this 1 by 2 value is representing which angle, or this 1 by 2 we are getting by which angle, with the help of which angle. If you will observe carefully, then you will come to know that a plus b is equal to 60 degree. This 1 by 2 is the value of 60 degree. इसको बोलेंगे हम equation number 2. Now suppose you will observe carefully, then you will come to know that equation 1 and 2. In this equation 1 and 2, a, b, those are the variables. Suppose you will consider, then you will see carefully, those are the linear equation in 2 variables. Those are the linear equation in 2 variables. Okay, a and b. Okay, we want to find out, and we want to find out a and b, not angle a and b, but we want to find out a and b. But it shows that a is greater than b, it shows that those are the angles only. Okay, if you will observe, then you will see it. Look here, I am going to show you. Now what to do? Look here, like that examples we have discussed. Okay, linear equation in 2 variable lesson. Try to remind little. I told you what I told. We have to observe first of all the variables of the equations, coefficients of the equation. First of all we have to observe variable, that is correct. First of all we have to observe variable a, b. Instead of x and y, here a and b is given, nothing else. Okay, then we have to observe the coefficients. इसका coefficient देखो और इसका. Okay, if the variables are having same coefficients and same sign, then we have to do subtraction. If the variables are having same coefficient and opposite sign, then we have to do addition. Now look here, b and b same variables are there. B and b same variables are there, and coefficients also same 1 1. A and a also same variables are there, and coefficient is also 1 1. Means by using those two linear equations, we can find either value of a or either value of b. Okay, but how to decide? Look here, a is having same sign, means we have to do subtraction. Suppose we have decided we want to find out, look here, suppose we have to decide we want to find out a. मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, ध्यान से सुनो. Suppose we have to decide we want to find out a find out करना है तो b को cancel करना पड़ेगा. And suppose we want to find out b, then we have to find out, then we have to cancel a. And we want to cancel a, then we have to subtract because same sign. And suppose we want to cancel b, then we have to add because opposite sign. Are you getting? Then what we will do? We will cancel this b by adding this equation. Add equation 1 and 2. We get, add करो, a minus b is equal to 30 degree plus a plus b is equal to 60 degree. A plus a, 2a, b will get cancelled. 30 plus 60, 90 degree. Okay, therefore we want to find out a. Divide these two. A is equal to 90 degree divided by 2, that is equal to what we got, 45 degree. Understood? Now what we will do? We will put this a is equal to 45 degree in any one equation. Equation 1 and 2, we are having two options. We will put in this equation, equation 2. Put a is equal to 45 degree in equation
1. We get what I written, put A is equal to 45 degree in equation 1. What is equation, equation 2 we have decided. Put A is equal to 45 degree in equation 2. What is equation 2? A plus B is equal to 60 degree. You can put in equation 1 also, no problem at all. 60 degree. Put value. Therefore, 45 degree plus B is equal to 60 degree. Therefore, B is equal to 60 degree minus 45 degree. B is equal to 60 minus 45 कितना आता है आंसर? 15 degree. Okay, understood? Means here we got A is equal to 45 and B is equal to 15. Understood? Do you understand what I did here? Okay, ये है दोनों little different types of example. I will show you notes page, you will understand it once again. ये देखो, ये नोट्स का पेज है. ये मैंने पहले एग्जाम्पल तुम्हें सॉल्व करके दिखाया. क्या करना है? ओनली ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, इधर हम एंगल फाइंड आउट किया है. दोनों एग्जाम्पल में भी हमने एंगल फाइंड आउट किया है. ध्यान से देखो और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. ओके, ये दूसरा एग्जाम्पल साइन ए माइनस बी है. साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2. 0 डिग्री इज लेस देन ए प्लस बी है इधर 90 डिग्री. ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड ए एंड बी. और अभी मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिखाया एग्जाम्पल. ओके, कैसे सॉल्व किया था देखो. हमने ऐसे सॉल्व किया था. इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिला तो लीनियर इक्वेशंस हमें मिले. बाद में हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की. बाद में हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट की. तो ए हो गया 45 डिग्री एंड बी हो गया 15 डिग्री. आई होप्स यू गॉट आइडिया अबाउट इट. एनी डाउट यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम. रिमेनिंग पॉइंट्स विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.